Good morning, everyone. A very good morning. Acha, who is with me? If it is my day 13, is this your day 13? हाँ, आज मेरा डे 13 है, आपका भी डे 13 है? 11th. अमन, झूठ. तुम्हारा डे 13 कहाँ से हो गया? You just joined me 2 days back. First. Good, Asha. Monica, you might not be sleeping at the same time. है ना? सुबह जल्दी उठते हो तो रात को जल्दी नींद भी आएगी. तो एट दैट टाइम यू हैव टू गो टू बेड एंड स्लीप. इसीलिए वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही है. ओके, क्योंकि अब तक तो हमें रेडी हो जाना चाहिए. टाइम पे सोते हो फिर भी कोई बात नहीं. थोड़ा और टाइम, 4-5 दिन और दो. इट विल बिकम एन हैबिट. है ना? हाँ, हर्ष नहीं हुआ. क्या करूँ यार. द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. प्लस क्लास होती है वो दैट बिकम्स अ मजबूरी. है ना? कल पता नहीं क्या हुआ है. माई दिस फिंगर इज स्वेलिंग. तो इसलिए आई वुड नॉट बी एबल टू राइट, या मुझे दिक्कत होगी तो जस्ट टू रिलैक्स इट मैंने क्लास नहीं लिया था फिर. टुडे आई विल बी कीपिंग अ क्लास. मुझे बताना सभी लोग, हम लोग जीओसी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते थे उनका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा. ठीक है? तो आप लोग मुझे बताना कि किस टाइम पे लेना है. मेरे पास 2 स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग 12 या इवनिंग में 8 बजे. मॉर्निंग 12, सुबह 12 बजे या शाम में 8 बजे. व्हाट वुड बी द बेस्ट फॉर यू? 12 बजे या 8 बजे? 12 बजे. पोल यहाँ कहाँ होता है पोल? आ जाओ, मैं पोल कर सकती हूँ. मॉर्निंग 12. शिट मैन. शिट. Just a minute.
इवनिंग में? अच्छा, इवनिंग में क्लास है। ओके, फिर तो मॉर्निंग में ही रख लेते हैं। मॉर्निंग में कोई टेस्ट तो नहीं है लेकिन? संडे यूजुअली तुम लोगों का टेस्ट होता है 13th। आज 13 नवंबर है, आज शाइन बैच का तो टेस्ट है। आज नहीं है। तो फिर भी एक बढ़िया पोल कर लेते हैं। बता दो मुझे। मैंने मेंशन कर दिया टाइमिंग्स। अगर आज कोई टेस्ट नहीं है तो तुम लोगों ने वो टेस्ट देना भी नहीं है क्या? अच्छा, हर्ष टेस्ट तो बाद में भी दे सकते हैं, यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। दिस इज द फॉल्ट। सब बाद में हो सकता है, पर टेस्ट बाद में नहीं हो सकता है। कितनी बार आपने ये सोच के कि टेस्ट बाद में दे दूंगा, आपने वाकई में बाद में दिया? थिंक ऑफ इट। दिया? ठीक है, माय क्लास विल बी इन मॉर्निंग। माय क्लास विल बी इन मॉर्निंग, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि मैं बाद में दे दूंगा और आपने बाद में दिया? आपको ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना, यू कैन पिक योर टेस्ट एंड यू कैन गिव इट एनी टाइम, वो इसलिए मिलती है सो दैट आप लोगों के क्लासेस के साथ क्लैश हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। ओके, ना कि इसलिए मिलती है कि आप वॉलंटियरली ऐसा करो। देखो, जरूरी नहीं है कि जब डंडा पड़े तभी अपने आप को समझाओ। खुद से भी अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाया जा सकता है ना? इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें पेपर बोलेगा कि नहीं इतने बजे टेस्ट देना है, हमें एकेडमी या कोई भी प्लेटफॉर्म बोलेगा कि हमें इतने बजे टेस्ट देना है, तभी तुम टेस्ट दोगे, उस टेस्ट को दोगे, या इसके मार्क्स काउंट होने हैं, या इसकी वजह से तुम्हें बोर्ड्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। तुम्हें जब धमकाया जाएगा तभी इफ यू पीपल आर वर्किंग। तो कैसे जेई, मतलब किसने बोला था कि जेई करो? नहीं यार, अपनी चॉइस से कर रहे हो ना। जब जेई की तैयारी अपनी चॉइस से कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट अपनी चॉइस से आया है, ठीक है, तुम इसके लिए लड़े थे मम्मा पापा से कि मुझे करना है, मुझे कोचिंग कराओ, जब सब कुछ तुमने किया था, तो फिर व्हेन इट इज कमिंग टू गिविंग अ टेस्ट, तो फिर उसके लिए तुम्हारे अंदर सेल्फ ड्राइव क्यों नहीं है? हाँ, तो these are the positives that you can give your test depending upon your flexibility, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा करो और टेस्ट दो। लेकिन अगर हम उस टेस्ट को स्किप कर देंगे तो ये प्रॉब्लम है। और मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी बोला था, संडे को एक टेस्ट देना ही देना है। दैट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर यू। एवरी संडे एक टेस्ट देना है एटलीस्ट। ओके, नहीं बैठा जाता बैठो, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है वैभव। हाँ, 3-3 घंटे जब स्कूल जाया करते थे तो 8-8 घंटे बैठा करते थे। सो देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि पेपर भी तो 3 घंटे का होगा। इफ यू कांट सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द 3 आवर्स, जब भी पढ़ा करो इकट्ठा 3 घंटे के लिए बैठा करो। बैठना पड़ेगा। ओके, एंड स्लोली स्लोली इट विल बिकम अ हैबिट। जैसा तुम्हें फिजिबल लगता है, फुल सिलेबस या टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसा तुम्हें बेटर लगता है, जो तुम्हें लगता है, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द होल सिलेबस, गो फॉर द फुल सिलेबस टेस्ट। अदरवाइज इट्स बेटर कि तो इस वीक में तुमने जो भी चैप्टर्स फिनिश किए हैं, है ना, उन सभी चैप्टर्स पे टेस्ट दो। फोकस मेंटेन होता है सेल्फ डिसिप्लिन से। अगर आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो सेल्फ कंट्रोल होगा, फिर आप वो करोगे जो आप करना चाहते हो। ओके, राइट।
ना कि किसी भी डायरेक्शन में जैसे चल रही है दुनिया वैसे चलते चले जाएँगे। आज दिन में जो होगा देखा जाएगा, जहाँ ज़िंदगी मोड़ेगी वहाँ मुड़ जाएँगे, जहाँ रोकेगी वहाँ रुक जाएँगे। ऐसे नहीं होता ना। अगर चलना है तो अ, जस्ट डू द थिंग्स योर वे। अपने हिसाब से अपने अपने दिन को चलाओ। ओके? चलो। आई होप यू ऑल हैव ड्रिंक योर वाटर। बिल्कुल। इफ यू गाइज आर इन सच अ प्लेस जहाँ पे आपको अन अकेडमी का एक्सपीरियंस सेंटर मिलता है, तो आप वहाँ पे जाके भी अपना टेस्ट दे सकते हो। टुडे आई बॉट माई बुक कि आई विल रीड समथिंग आउट लाउड, बट इस बुक पर भी पानी फैल गया। नहीं है तो क्या करे, अपने घर में बैठ के दो शांति से। देख लो, मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें पूछते हो तुम मेरे से, जिसके आंसर्स तुम्हारे पास खुद के पास है, बट यू आर नॉट आस्किंग योर सेल्फ ये नहीं तो इसका क्या करेंगे, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो क्या सोल्यूशन होगा। हाँ। यू प्रिपेयर योर शेड्यूल फॉर द डे। शेड्यूल में टेस्ट, आज का जीओसी का रिवीजन सेशन आना चाहिए। रेस्ट, प्लान योर थिंग्स योर वे। बाकी और क्या क्या करना है प्लान करो। Okay, I will read something. If you find it right, just follow, otherwise, just leave. Okay? Clear? It's just a reading from the book. How to find a game where the odds are in your favor. How to find a game, please listen it carefully. How to find a game where the odds are in your favor. Learning to play a game where the odds are in your favor is critical for maintaining motivation and feeling successful.
In theory, you can enjoy almost anything. In practice, you are more likely to enjoy the things that comes easily to you. People who are talented in a particular area tend to be more competent at their task and are then praised for doing a good job. They stay energized because they are making progress where others have failed, and because they get rewarded with better pay and bigger opportunities, which not only makes them happier but also propels them to produce even higher quality work. It's a virtuous cycle. Pick the right habit and progress is easy. Pick the wrong habit and the life is a struggle. How do you pick the right habit? The first step is something we covered in the third law, make it easy. Okay, it was something else. In many cases, when people pick the wrong habit, it simply means that they picked a habit that was too difficult. When a habit is easy, you are more likely to be successful. When you are successful, you are more likely to be satisfied. However, there is another level to consider. In the long run, if you continue to advance and improve, any area can become challenging. At some point, you need to make sure you are playing the right game for your skill set. How do you figure that out? The most common approach is trial and error. Of course, there is a problem with this strategy. Life is short. You don't have time to try every career, date every eligible bachelor, or play every musical instrument. Thankfully, there is an effective way to manage this conundrum, and it is known as the explore exploit trade off. In the beginning of a new activity, there should be a period of exploration. In relationships, it's called dating. In college, it's called the liberal arts. In business, it's called the split testing. The goal is to try out many possibilities, research a broad range of ideas, and cast a wide net. After this initial period of exploration, shift your focus to the best solution you have found, but keep experimenting occasionally. The proper balance depends on whether you are winning or losing. If you are currently winning, you exploit, you exploit. If you are currently losing, you continue to explore. You mark this line. If you are currently winning, you exploit. If you are currently losing, you continue to explore, explore. In the long run, it is probably most effective to work on the strategy that seems to deliver the best results about 80 to 90% of the time and keep exploring with the remaining 10 to 20%. Google famously asks employees to spend 80% of the worksheets on their official job and 20% on projects of their choice, which has led to the creation of blockbuster products like AdWords and Gmail. Got this 80-20 ratio? The optimal approach also depends on how much time you have. If you have a lot of time, like someone at the beginning of their career, it makes more sense to explore because once you find the right thing, you still have a good amount of time to exploit it. If you are pressed for time, say as you come up on the deadline for a project, you should implement the best solution you have found so far and get some results. As you explore different options, there are a series of questions you can ask yourself to continually narrow in on the habits and areas that will be most satisfying to you. What feels like fun to me but work to others? क्या है जो मुझे मजा आता है और दूसरों को वो काम लगता है? The mark of whether you are made for a task is not whether you love it, but whether you can handle the pain of the task easier than most people. When are you enjoying yourself while other people are complaining? The work that hurts you less than it hurts others is the work you were made to do. Okay. जो काम दूसरों को काम लगता है पर तुम्हें मजा लगता है, दिस इज व्हाट समथिंग यू आर मेड फॉर. जो काम दूसरों को एक टास्क लगता है, लेकिन वो तुम्हें उनको चैलेंजिंग लगता है, बट तुम्हें वो एक छोटा-सा काम लगता है एंड यू फाइंड इट लेस डिफिकल्ट.
That would be the fun to work with. What makes me lose track on time? Flow is the mental state you enter when you are focused, when you are so focused on the task. What makes me lose track of time? Flow is the mental state you enter when you are so focused on the task at hand that the rest of the world fades away. This blend of happiness and peak performance is what athletes and performers experience when they are in the zone. It is nearly impossible to experience a flow state and not find the task satisfying, at least knows to some degree. ठीक है, फोकस उसे कहते हैं कि व्हेन वी आर फोकस्ड ऑन समथिंग देन द अदर थिंग्स गेट्स फेड्स अवे, जो एथलीट्स के साथ होता है, जो परफॉर्मर्स के साथ होता है, व्हेन दे परफॉर्म समथिंग दे हैव नो आइडिया दैट हु एल्स इज ऑल अराउंड, उनको कुछ नहीं पता, द वर्ल्ड फेड्स ऑफ फॉर देम. That is basically what focus is. Where do I get greater returns than the average person? Where do I get greater returns than the average person? We are continually comparing ourselves to those around us. And behavior is more likely to be satisfying when the comparison is in our favor. When I started writing at jamesclear.com, my email list grew very quickly. I was not quite sure what I was doing well, but I knew that results seemed to be coming faster for me than for some of my colleagues, which motivated me to keep writing. What comes naturally to me? What comes naturally to me? For just a moment, ignore what you have been taught, ignore what society has told you, ignore what others expects of you. Look inside yourself and ask, what feels natural to me? When have I felt alive? When have I felt like the real me? No internal judgments or pupil pleasing. No second guessing or self criticism. Just feelings of engagement and enjoyment. Whenever you feel authentic, genuine, you are headed in the right direction. To be honest, some of this process is just luck. Michael helps, and the Haikam Ilgros were lucky to be born with a rare set of abilities that are highly valued by society and to be placed in the ideal environment for those abilities. We all have limited time on this planet, and the truly great among us are the ones who not only work hard but also have the good fortune to be exposed to opportunities that favor us. But what if you don't you don't want to leave it up to luck? If you can't find a game where the odds are stacked in your favor, create one. If you can't find a game where the odds are stacked in your favor, अगर आपको लगता है कि odds मेरे फेवर में नहीं है, then you can create one. Scott Adams, the cartoonist behind Dilbert, says everyone has at least a few areas in which they could be in the top 25% with some effort. Top 25%, everyone, everyone has at least few areas in which they could be in the top 25%. मतलब हर इंसान किसी भी फील्ड में, है ना, अपनी कैटेगरी के टॉप 25% में हो सकता है. In my case, I can draw better than most people, but I am hardly an artist. And I'm not any funnier than the average stand up comedian who never makes it big. But I'm funnier than most people. The magic is that few people can draw well and write jokes. It's the combination of the two that makes what I do so rare. And when you add in my business background, suddenly I had a topic that few cartoonists could hope to understand without living it. When you can't win by being better, you can win by being different. When you can't win by being better, you can win by being different. By combining your skills, you reduce the level of competition.
which makes it easier to stand out. Okay, you can shortcut the need for a genetic advantage or for years of practice by rewriting the rules. A good player works hard to win the game everyone else is playing. A good player works hard to win the game everyone else is playing. A great player creates a new game that favors their strengths and avoid their weaknesses. In college, I designed my own major biomechanics, which was a combination of physics, chemistry, biology, and anatomy. I was not smart enough to stand out among the top physics or biology majors, so I created my own game. And because it suited me, I was only taking the courses I was interested in. Studying felt like less of a core. It was also easier to avoid the trap of comparing myself to everyone else. Okay, if you have your new game, you won't compare yourself with others. After all, nobody else was taking the same combination of classes, so who could say if they were better or worse? अगर कोई उस कॉम्बिनेशन को उस सेट ऑफ कोर्सेज को ले ही नहीं रहा है तो किससे तुम कंपेयर करोगे कि कौन बेटर है कौन वर्स है ओके specialization is a powerful way to overcome the accident of bad genetics. Specialization is a powerful way to overcome the accident of bad genetics. The more you master a specific skill, the harder it becomes for others to compete with you. Many bodybuilders are stronger than the average arm wrestler, but even a massive bodybuilder may lose at arm wrestling because the arm wrestling champ has very specific strength. समझ रहे हो समझ रहे हो दिस इज क्वाइट रिलेटेड टू आर हिंदी वाला फ्रेज कि जहाँ काम आवे सोई वहाँ क्या करे तलवार है ना तो एक मैसिव बॉडी बिल्डर एक आर्म रेसलर से हार जाता है क्यों क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है ओके इफ यू आर नॉट द मोस्ट नेचुरली गिफ्टेड यू कैन ऑफन विन बाय बीइंग द बेस्ट इन अ वेरी नैरो कैटेगरी अगर आपको लगता है इफ यू आर नॉट द मोस्ट नेचुरली गिफ्टेड you can often win by being the best in a very narrow category. Boiling water will soften a potato but harden an egg. Boiling water will soften a potato but harden an egg. You can't control whether you are a potato or an egg, but you can decide to play a game where it's better to be hard or soft. If you can find a more favorable environment, you can transform the situation from one where the odds are against you to one where they are in your favor. How to get the most out of your genes? The last, how to get the most out of your genes? Our genes do not eliminate the need of for hard work. Is it? Is it? Our genes do not eliminate the need for hard work. क्या आपकी जीन्स ने आपको ये सिखाया है कि हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, हार्ड वर्क एलिमिनेट कर दो? सिखाया है? आई बिलीव नेवर नो शिट जस्ट अ मिनट बेसिकली इफ यू वुड सी योर पेरेंट्स यू विल फाइंड कि या मम्मा को देखोगे then you will get to know she works for 14 hours a day 16 hours a day if you will see your father you will find that he works in office he works at shops he works for his business for 9, 10, or 12 hours for the day and after that when he returns back home he still keeps working ठीक है तो they never say that we need a break so our genes do not eliminate the need for hard work that's very true they clarify it they tells us what to work hard on
हमें ये तो पता है हार्ड वर्क करना चाहिए, बट ऑन व्हाट वी नीड टू वर्क हार्ड ऑन. Once we realize our strengths, we know where to spend our time and energy. We know which types of opportunities to look for, which types of challenges to avoid. The better we understand our nature, the better our strategy can be. Biological differences matter. Even so, it's more productive to focus on whether you are fulfilling your own potential than comparing yourself to someone else. Fulfilling your own potential than comparing yourself to someone else. The fact that you have a natural limit is to specific ability has nothing to do with whether you are reaching the ceiling of your capabilities. People get so caught up in the fact that they have limits that they really exert the effort required to get close to them. This happens. हमारा फोकस ज्यादा इस पे रहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज माई लिमिट, है ना. लेकिन हमारी स्ट्रेंथ्स पे कभी नहीं जाता है. Furthermore, genes can't make you successful if you are not doing the work. Furthermore, genes can't make you, जरूरी नहीं है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा. Genes can't make you successful if you are not doing the work. Yes, it is possible that the right trainer at the gym has better genes, but if you have not put in the same reps, it's impossible to say that if you have been dealt a better or worse genetic hand. Until you work as hard as those you admire, don't explain away their success as luck. Until you work as hard as those you admire. Until you work as hard as those you admire. Don't explain away their success as luck. In summary, one of the best ways to ensure your habits remain satisfying over the long run is to pick behaviors that align with your personality and skills. Work hard on the things that come easy. Let me summarize all the points. The secret to maximizing your odds to success is to choose the right field of competition. If you want to write it, you please write it. The secret to maximizing your odds of success is to choose the right field of competition. Pick the right habit and progress is easy. Pick the wrong habit and the life is a struggle. Genes cannot be easily changed, which means they provide a powerful advantage in favorable circumstances and a serious disadvantage in the unfavorable circumstances. Habits are easier when they align with your natural abilities. Choose the habits that best suits you. Play a game that favors your strength. If you can't find a game that favors you, create a one. Genes do not eliminate the need for hard work. They clarify it, they tell us what to work hard on. I believe this is it for you. Okay. See, what changes us, what make us do something to do is what click us. हम सुनते बहुत कुछ है, हम करते बहुत कुछ है, हम देखते बहुत कुछ है, लेकिन मैटर ये करता है क्या है जो हमें वाकई क्लिक करता है ना, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं. ओके, सो इट वाज अ शॉर्ट रीडिंग फॉर यू. ऑटिस्टिक, इट वाज एग्जैक्टली ऑटिस्टिक या कुछ और था? ठीक है.
अ, कुछ टॉपिक्स याद करना होता है। देखो याद तो नहीं, स्टार्ट विद योर पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है? इन टॉपिक से स्टार्ट करो एंड देन यू कैन मूव अहेड। ठीक है? राइट नाउ ऑलरेडी 6। आई जस्ट वांट यू टू बी वेरी फोकस्ड। क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योर गोल एंड डू टेक केयर व्हाट आई एम फिनिशिंग इट ऑफ। तुम्हारी फिनिश लाइन कहाँ पर है? तुम्हारी व्हाट यू हैव टू हेड अप किसको देना है? ठीक है? टुडे इज संडे, सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू फोकस ओवर कि व्हाट यू हैव फिनिश्ड एंड वेयर यू हैव टू हेड्स अप। क्या शुरुआत करनी है? ठीक है? फॉर द नेक्स्ट वीक एंड प्लान योर वीकली शेड्यूल अकॉर्डिंगली। शेड्यूल्स बनाने में टाइम नहीं, बस आपको आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके गोल्स क्लियर है तो यू विल बी एबल टू फोकस ओवर योर टास्क वेरी इजीली। ओके, ग्रेट वैभव। ओके, ग्रेट। तो बेसिकली चलो फिर लग जाओ। इट्स 6 ऑलरेडी। ठीक है? सो स्टार्ट योर डे। और इट इज संडे बट इट्स अ डे फॉर यू। ठीक है? डजंट मेक्स अ संडे और मंडे। चलो गाइज। और यू प्लीज प्रिपेयर योर शेड्यूल। अपने, मैंने क्या बोला? योर फिनिश लाइन एंड योर हेड्स अप, वर्क ऑन देम एंड कंटिन्यू। Today I will be having my class at 8 a.m. just to inform you. सुबह 8 बजे भी क्लास है and I will be also taking your session morning 12 रख लेती हूँ। ठीक है? Those who have sent their homework, I will have a look on it. ठीक है? Bye guys.